Hello class 4 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your science teacher Sila and today we will start your 9th chapter which is sound. So let's get started. Learning objectives. After completing this chapter, we should be able to know different types of sounds, about pleasant sounds, animals sound, sounds we make, about unpleasant sounds, sounds in nature. तो यहाँ पर हम इन सभी चीजों को सीखेंगे. अब आपको दिया है एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. व्हाट डज अ बेबी डू व्हेन ही और शी इज हंग्री? आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स एवरी डे. द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, द honking of horns and mobile ringtones are some of them. When we speak or laugh, we produce sound. Look at the given pictures of things and recognize their sound and write below each picture. तो यहाँ पर जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं उन सभी का साउंड आपको रिकॉग्नाइज करना है और उसका नाम यहाँ पिक्चर्स के नीचे लिखना है. Sound is produced by vibrations. Vibration is fast and far movement. We make sounds when we talk. We communicate with each other by talking. People all over the world talk in various languages. All these languages made up of different sounds. अब आपको यहाँ पर दिया है boost your brain. People who cannot hear or speak communicate by sign language using hand gestures or actions. Next topic है आपका different type of sounds. Sounds we make. We make different types of sounds when we talk, laugh, shout, cry, cough or sneeze. We make all types of sounds with our voice box. Can we also make sounds without using our voice box? See the given pictures below. They all are making sounds without using their voice box. Pleasant sound. The sounds that we make may be pleasant or unpleasant. Sounds which are soft are called pleasant sounds. We enjoy these sounds such as the sounds made by musical instruments, chirping sounds made by birds. We can make pleasant sounds with musical instruments. आपको यहाँ पर सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी दिए हैं और पिक्चर्स भी दिए हैं. नेक्स्ट इज बूस्ट योर ब्रेन. फ्लूट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. तो ये आपके लिए एक फैक्ट था. नेक्स्ट टॉपिक इज अनप्लीजेंट साउंड. प्लीजेंट साउंड मतलब जो हमें सुनने में अच्छा लगता है. अनप्लीजेंट मतलब जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं सुनना चाहते. Sounds can be soft or loud. Some loud sounds can be very unpleasant. Loud sounds are disturbing and can be bad for us. What happens when you and your friends start talking together? What does your teacher tell you? She tells you to not make noise. आप जो क्लास में बातें करते हैं सारे फ्रेंड्स साथ में तो बहुत ज्यादा शोर होने लगता है क्लास में, तो आपके टीचर आपको कहते हैं ना चुप होने के लिए, शोर मत मचाओ ऐसे कहते हैं, डोंट मेक नॉइज. क्योंकि बहुत सारे लोग जब बोलेंगे तो लाउड होती है आवाज और वो अनप्लीजेंट लगती है सुनने में. लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइज. नॉइज हर्ट्स द ईयर्स. एनिमल्स डू मेक साउंड्स. यहाँ पर आपको काफी सारे एनिमल्स के पिक्चर्स भी दिए हैं नाम के साथ. ये सभी एनिमल्स भी साउंड निकालते हैं. Sound in nature. We can hear many sounds in nature. हम नेचर में भी काफी सारे साउंड सुन सकते हैं जैसे कि rustling of the leaves, pitter patter of the rain, cracking fire, thunder. तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. करते हैं इसे सम अप. We hear various types of sounds every day. We cannot see the sound, but we can hear it. We make different types of sounds with our voice box. Sounds can be soft, loud, pleasant and unpleasant. Animals do make sounds. तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट जो हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा. तो एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे and we'll meet you in the next class. Till then, bye students.